सेंट जेवियर्स स्कूल तरवा आजमगढ़ में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में सेंट जेवियर्स लालगंज और सेंट जेवियर्स तरवा स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इसमें छात्रों ने विभिन्न खेलों में उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना और उनमें टीम भावना का विकास करना था। विद्यालय के निदेशक सुशांत चंद्रा ने मशाल प्रज्वलित कर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में भारत के ओलंपिक विजेता राजकुमार पॉल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राजकुमार पॉल ने कहा कि खेल के मैदान में दिखाया गया जोश जीवन के हर क्षेत्र में अपनाना चाहिए और हर चुनौती का सामना हिम्मत व ईमानदारी से करनी चाहिए। T1024 के कैंडिडेट एडिटर अमित कुमार सिंह से T1024 के कंटेंट एडिटर अमित कुमार सिंह से बातचीत के दौरान स्कूल प्रिंसिपल चितरंजन दास ने कहा कि पढ़ना बच्चों के लिए जितना जरूरी है उतना ही जरूरी खेलकूद भी है। देखिए T1024 पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं अमित कुमार सिंह, टाइम टीवी न्यूज आजमगढ़ से। आज मैं उपस्थित हूँ आजमगढ़ के लालगंज तहसील अंतर्गत तरवा स्थित सेंट जेवियर स्कूल में। यहाँ पर एक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें विशिष्ट अतिथि रहे राजकुमार पाल। राजकुमार पाल किसी परिचय के मोहताज नहीं। ही वाज द पार्ट ऑफ ओलंपिक एंड ही इज प्रमोटेड एज ए डीएसपी बाय द सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सच let's do a conversation with the principal of that school. Sir, first of all, introduce yourself. What's your name? I'm Chitaranjan Nayak, principal St. Xavier's School Tarwa. I am basically belongs to Odisha. Last 4 years, I am serving as principal in this institution. Sir, tell me about today's event. What's actually program by your organization, St. Xavier Group? Sir, we have organized this event for 2 days. Okay. Yesterday it was inauguration day. Our chief guest was Mr. Rajkumar Pal, Okay. who is present member hockey player of Indian team, and also he was the bronze medalist of Paris Olympic. Okay. Sir, actually Rajkumar Pal is just belong from our native district Gazipur, and he is starting his sporting career with Karapuri Stadium. I have already done interview of Lalit Upadhyay and Rajkumar Pal. So such a person came in your school. It's a fortunate for Xavier and for you also, sir. What you will say regarding this? Definitely, last 10 days before, I was interacted with the coach of Rajkumar Pal, Mr. Indradev Rajvar, and within 10 days we have a conversation, and he was highly pleased with the school, and he visited the school. His coach visited the school. Then he has given confirmation he will discuss with Rajkumar Pal and he will become the chief guest of our organization. And he was after that time he was in South Africa. At any moment, 17th of December, he reached at Lucknow, and he was a interaction program with Chief Minister. But after all, he was cancelled that program, and he was committed to join as the chief guest. He came and joined with us, and it is a proud moment for my students, for my teachers, for the local people those are present in here, because they were not expecting that he such a legendary person will be. सर, एक दौर हुआ करता था कि कहते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे, खराब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, such a player who make that what we'll say foretell wrong. The thing is that कि now the player who is coming such a area, they make us proud, they feel us proud. Sir, What you will say regarding this? Sir, what's your name? Sir, my name is Achintya Ghosh. I am working here as a vice principal. For the last 1 year, I am here. And as we know, our school is affiliated to CBSE, and CBSE is focusing on the holistic development of the students. Okay, holistic development of the student means with the normal curriculum, the students will also participate in co-curricular activities, which sport is also a part of that. So our school also focuses on that, and for them also the students have showcased their sportsmanship for the last 2 days, and today was the conclusion day of for the 2 days sports meet. तो जहाँ तक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ है, वो खेल को भी बहुत बढ़ावा देते हैं, उसको इनकरेज करती है। इसी वजह से ये हुआ कि ललित उपाध्याय जब इसके पहले वाले में ओलंपिक जीता था, उनको डीएसपी प्रमोट किया। फिर अभी कुछ ही दिनों पहले ये करमपुर में आए थे, राजकुमार पाल को भी डीएसपी बनाया है। तो खेल कहीं कहीं अब उतना ही अहम रह गया है जितना पढ़ना है।
तो क्या कहेंगे मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good evening, sir. This is Nutan Singh. I'm teacher over here. पहले का दौर जैसे आपने कहा, you said कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन आज वही दौर उल्टा हो गया है, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। तो स्पोर्ट्स इज की हाउ स्पोर्ट्स ज्यादा मतलब सही है, स्पोर्ट का एक बहुत अहम रोल हो गया आज के डेट में। हाँ, जी। तो a hidden talent is there which showcase during their sports also. वही रहेगा ना, जैसे अगर हम लोग बात करें गाजीपुर करमपुर स्टेडियम की, तो ललित भी वहीं से खेल के आज ओलंपिक का हिस्सा रहा है, राजकुमार पाल भी रहा है, हो सकता है अपनी जेवियर का भी कोई बच्चा Definitely, तो ये also part of बहुत बनेंगे। जेवियर के स्टूडेंट्स जैसे हैं, they will frame their name in a sports. जी। अगर मैं बात करूँ मेघ भगत सिंह स्टेडियम की करमपुर की, वहाँ से उदयवीर यादव निकला है, एथलीट में सिल्वर मेडल लेके आया है। तो अभी प्रतिभाएं गांव से बहुत निकल रही है। अगर हम लोग सूर्य कुमार यादव की बात करें, वो भी उसी मिट्टी से आते हैं। आजमगढ़ की मिट्टी से कई बच्चे अंडर 18 में गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों से बच्चे आ सकते हैं और छोटे शहरों से भी अच्छे लोग आ रहे हैं। मैम, व्हाट्स योर नेम? My name is Nipa Naik, PRT teachers of class 2 and the part of the St. Xavier School teachers. आज के बारे में बताइए। आज के इवेंट बारे में सारे इवेंट मेरा जितना लास्ट प्रोग्राम का जो था इवेंट में वॉलीबॉल एंड कबड्डी गेम हुआ था। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, अलग अलग कैटेगरी के गेम हुआ था। जी, ठीक है। Last but not the least, sir, intro yourself. What's your name? Good evening, sir. I am Jagdeep Maiti, PGT English. I am working here for last 2 years. मैं देख रहा था जब से आया था, you are heading top to bottom. आप पूरे सीधे से लगे हुए थे सर। तो कैसा रहा आज का एंड ऑफ द डे, कैसा रहा रिजल्ट? No, you are wrong. I am not from the top to bottom. No, you not gotten my point. The thing is that you are monitoring each and everything from top to He bottom. was anchoring the. I was just That is anchoring. what I am saying. But I was just anchoring, but I was working under the leadership of our director, sir. you have an eagle eye of throughout the cricket. Definitely, I have taken that responsibility to conclude all the things properly. For that, I was trying to do everything under the leadership of our principal, sir, Mr. Chitranjan Nayak, as well as our director, sir, Mr. Susan Chandra. And it was no doubt a spectacular experience. For last 2 days, they had the students, young students, they have shown really great talent. We ever Hidden talent. obviously it was a hidden talent. We also didn't expect such much talents will come out, and the students also enjoyed. Along with the studies, they are also participating with sports and games. Also they enjoyed, we also enjoyed. We are really happy also. हाँ सर, लास्ट में एक क्वेश्चन मैं भूल गया था। जो बच्चे विजयी हुए हैं कई कैटेगरी में, कुछ का नाम आपको याद है क्या? नाम जैसे आपका नॉट ओनली जो इवेंट था, इट इज आवर ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट जेवियर स्कूल तरवा, बट सेंट जेवियर स्कूल हाई स्कूल लालगंज, they have also participated. Okay. They have some group events, there are some house-wise events, and in kabaddi competition, St. Xavier's High School Lalganj, they won Actually, all the category games, and some individual games are there, but so many people, so many students are there. I hope near about 300 students participated, so it is very difficult to remember the name, but I have seen the talent of the students, the courage of the students, the I can say how much eagerness and energy that they have shown for the last 2 days. It is remarkable, and it is very the parents have also supported us right through the event. You cannot believe, sir, during that game also we are conducting our post-metric examination. Our post-metric examination completed on 16th, we have started the event on 19th. The students not getting time for preparing themselves, but after that also we have organized for cultural program also, and you cannot believe how the students perform with the guidance of our teachers. It is a rural belt, but thing is there ki the teachers, they are hardworking teachers, they have to work hard for the students, and the students, they have lots of energy, and at last I will say my parents are supporting a lot. From 9 a.m. to 3:30, 4 p.m. the students are staying, small kids, nursery, LKG, UKG students are staying, but after that I am not getting a single complaint from the parents. The thing is that if parent not support his child,
obviously that support I'm getting from the Yeah, parents, yeah. and as well as my director sir also, who was untiringly supporting me. And Chandra sir is already very dedicated towards this school. Okay. ये थे हमारे साथ डायरेक्टर सर की पूरी टीम, चंद्रा सर की पूरी टीम। मैं अमित कुमार सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन गौरव के साथ टाइम टीवी न्यूज आजमगढ़ से।